Good evening. How are you all? Tell me. Good evening, sir. ये फ्राइडे को जरा क्या रहता है? Tell me. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फ्राइडे को जरा क्लास रहेगा क्या? हाँ सर, रखा है एक्स्ट्रा क्लास। रखा है क्या? क्या टाइमिंग है? वही सर, पता नहीं, पर उन्होंने बोला कि यूजुअल स्ट्रेच नहीं होगा। इट विल हम्म। एंड अराउंड 8-8:30, पर क्लास रखा है फ्राइडे को। ओके। और फ्राइडे तेरा मॉर्निंग कॉलेज है ना? हाँ चल, तो टुमारो एंड डे आफ्टर सेम टाइम। ठीक है, फिर मंडे से वील चेंज द टाइम। ओके। सर, इसका क्या इशू हो रहा है? ये रियो प्ले का मेरा क्यों शो अरे नहीं कर कुछ इशू रहा? नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। हमारी टीम है, वो कल 10:30-11 बजे ना मैं तेरा नंबर दे दूंगा। आज ही मेरी बात हुई उससे। वो बोला आज तू रिफ्रेश कहाँ कर रहा है? उसके टैब में ही सर, डेस्कटॉप पे जो बताता है ना, एक सर्च का बताता है, एक फिल्टर का बताता है, एक रिफ्रेश का, तो वो हाँ, मैंने तो प्रेस करता हूँ, रिफ्रेश कुछ शो ही नहीं करता। हो जाना चाहिए क्योंकि तेरा ये जो तेरी की वगैरह जो मैंने भेजी है तेरे को, की वगैरह एक्टिवेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो कुछ तेरे यहाँ से तू दो इससे देख रहा है क्या? नहीं, दो एक ही डिवाइस। डिवाइस पे रजिस्टर है ना। ठीक है, तो वही डिवाइस पे देख रहा है क्या? ठीक हाँ, है, मैं मेरे कल क्या लैपटॉप से करता ही हूँ, हमारे यहाँ है। पे एक बंदा है जो ये सब क्वेरी देखता है, वो देख लेगा, टेंशन मत ले। ठीक है, हो जाएगा तेरा कल तक। हाँ मैंने सर, आज वही उसने मेरे को आज बोला कि उसको बोलो आज आप लेक्चर डालने के बाद एक बार चेक करने को बोलो, तो इसलिए मैंने तेरे को आज बोला, नहीं तो कल वो तेरी क्वेरी ले लेगा। हाँ सर, निशान वो का तो रिकॉर्डिंग वगैरह एक्सेस करने के लिए तो कुछ कंटेंट ही शो नहीं करता उसमें तो। अरे कर देगा बाबा, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा कल तक। ठीक है। ओके सर। आज मैं उसके ऑफिस में ही बैठा था, जब मैं तेरे से मतलब शाम को तेरा चेक किया मैंने, लेक्चर अपलोड किया और फिर उसके ओनर के साथ बैठा था, तो अभी ओनर को वो क्वेरी बोलने का तो थोड़ा ये हो रहा है। हमारा आज मीटिंग था शाम को 5-5:30 बजे, तो अभी सर हमारा आज एक तो मिनट मेरा सर। ओवर टाइम है। मॉर्निंग 9 o'clock आई लेफ्ट हाउस, तो अभी तक काम चल रहा है। 7:30 to 9:15 भी क्लास था, 5 PM वहाँ पे मीटिंग था, तो आज अभी ओवर टाइम पे चल रहा है। राइट। सो निशान, टेल मी हाउ आर यू डूइंग? You must be getting tired in the evening, अरे after all that work and sitting for class, हाँ सर, इसलिए इसीलिए मैं मॉर्निंग का इज सुबह, प्रेफरेबल, हाँ, राइट? क्योंकि क्या हो रहा था सर, आई वाज नॉट गेटिंग टाइम लाइक होमवर्क या कुछ देखने के लिए, सो वही आई सो अंडरस्टैंड। See, if there is a class in the morning you will wake up, but वही पढ़ाई या करने के लिए you will not wake up, सो right? या दैट्स व्हाट, सो हाँ एटलीस्ट नाउ आई थिंक शाम को तो एक एटलीस्ट 1.5 hour आई कैन स्पेंड हाँ, नहीं लाइक ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इवन विद द तायर डे। के साथ एक बार मंडे से फिर वो हो जाएगा ना। यस सैटरडे यस। संडे मेरे को एक टाइम, मैं फ्राइडे को डालता हूँ, फ्राइडे को एक कंफर्मेशन की सैटरडे संडे का टाइम क्या रहेगा। ठीक है। हाँ चलो 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 चलो। चलो आ जाओ। So this was something that where we stopped yesterday, correct? Hey Nishan, you हाँ don't have any other PC or Android phone? Tell me. फोन आई हैव सर, एंड्रॉयड है सर। तो एंड्रॉयड के फोन पे वो की रजिस्टर कर देना, रियो हाँ प्ले जी, को मैं वही कर। डाउनलोड करके, सो हाँ, दैट इफ यू वांट टू एवर व्यू द रिकॉर्डिंग्स। चेक। अभी तो ये वीकेंड पे एलएमएस भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस डालना शुरू करूँ, स्लोली स्लोली 20-30 क्वेश्चंस डालता हूँ। आप हाँ वेरीफाई हाँ, करो कैसा दिख रहा है वो वहाँ पे। ठीक है, ओके ओके सेक्शन ए सर। सो और बी फोन, डालना शुरू करता हूँ। हाँ हाँ फोन में हो जाएगा सर, एलएमएस आई मीन हाँ, फोन में हो बुक। जाएगा, एलएमएस भी हो जाएगा, तुम्हारा लेक्चर व्यूइंग भी, इवन दिस लेक्चर व्यूइंग नो, हाँ हाँ ये हाँ, भी फोन से तो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओ लाइक सेलेक्ट करके हम ऑप्शंस उधर आंसर टिक हाँ कर सकते हैं। हाँ राइट, यस। पर ओके, मैं सर, तो ये चेक। मैं यू एक्सेस तो कैन, एक ही डिवाइस से हो सकता है ना? यानी पहले वाला फोन पे तो डी रजिस्टर करना पड़ेगा ना? नहीं, उसका ऐसा है कि उसका अभी ही इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द ऐप बिकॉज उसके लैपटॉप पे वो नहीं चल रहा है ऐप, बिकॉज उसका कंपनी का है लैपटॉप, अच्छा। इसलिए। राइट। चलो, तो आ जाओ, बिकॉज उसके पास दूसरा लैपटॉप नहीं है, पर्सनल लैपटॉप। राइट।
चलो मेरे को मेरे दिन याद आ गए। मैंने जब मेरा काम शुरू किया था, मे बी 3.5 years अगो, राइट, मेरे पास भी लैपटॉप नहीं था, फोन नहीं था। ऐसे मतलब फोन था बट वैसे इतना भारी वाला फोन नहीं था, राइट, वेयर आई कुड वर्क एवरी डे ऑन दैट फोन। अभी भी मेरे पास फोन है, बहुत नॉर्मल फोन है, मेरे पास कोई आईफोन वाईफोन नहीं है। हाँ, सो मेरे पास था बट वो पुराना लैपटॉप है सर, बट वो यूज नहीं कर रहा था। फिर ऑफिस का लैपटॉप आई डिड नॉट फाइंड एनी नीड ऑल्सो, सो मैंने हाँ खरीदा वो भी नहीं वैसा ही सर। होता है, राइट। तो मेरे को हाँ भी अभी व्हेन आई स्टार्टेड समथिंग न्यू, तो मैं ओल्ड एम्प्लॉयर का लैपटॉप दे दिया। तो आई बॉट अ हाँ लैपटॉप फॉर माय वाइफ। अभी इसलिए तो मैं बीच में इवन आई टुक, मैंने बहुत सोचा, राइट, कि व्हाट टाइप ऑफ लैपटॉप टू बाय। फिर आई सॉ न्यू लैपटॉप समवेयर अराउंड 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 तक आता है, राइट। हाँ हाँ सेम लैपटॉप मेरे एक फ्रेंड ही डस, वो क्या होता है, सम रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स होते हैं ना, हाँ राइट। हाँ, ओके। तो आई गॉट इट फॉर 21,000। दैट्स अ गुड बाय सर। तो फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा, ठीक है, फिर मैंने सोचा यार काम तो वही करना है, राइट, हाँ सर। उसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। वो बोला खाली कि क्या है कि वो इट इज आई थिंक 6 months और 4 months ओल्ड। तो हाँ मैंने देन बोला इट्स कि फाइन। सर, वेयर इज 1,20,000 एंड वेयर इज 21,000, हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आई टुक दैट 21,000 का। मैं एक और स्क्रीन भी लेने का सोच रहा हूँ, राइट। अभी मेरे पास एक फॉर स्क्रीन है लेक्चर, छोटा वाला। यस। सो लेक्चर के लिए, ओके। लेक्चर, यार, सो हाँ विच हैज जूम इंटीग्रेटेड इनटू इट, ऐसा है। तो आई कैन डायरेक्टली वर्क जूम, और एंड आई कैन डू दिस। उसमें वो टच स्क्रीन है, तो ओके ओके। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आई डोंट नो। मैं एम वेरी कंफर्टेबल विथ लैपटॉप और ये स्क्रीन और ये सब। बहुत सारी चीजें होती है मेरे टेबल पे, पूरा टेबल ऐसे भरा हुआ है विथ वायर्स। मल्टीटास्क। ये इधर से लैपटॉप, लैपटॉप टू स्क्रीन, फिर एक आई गॉट वन हब ऑल्सो, क्योंकि आई गॉट वन माइक, एक, हाँ, क्या है तुम्हारा, माउस और कीबोर्ड, हैंड, ये तुम्हारा राइटिंग बोर्ड, राइट। हाँ दिस द स्क्रीन पे हाँ, सर। प्लस कैमरा का ऑप्शन है, कैमरा अलग से मैंने लगाया है, तो आई हैव वो एक हब लगाया है मैंने उसका। वो कुछ 22,000 का हब है, डेल का। वो टू थाउजेंड पूरा रुपीज इसका। में हाँ, 2,000 रुपीज में मिला है, 22,000 का। तो आई गॉट अ गुड फ्रेंड, ऐसा अच्छा फ्रेंड है, वो डज ऑल थिंग्स थिंग्स, तो ही हेल्प्स मी, मतलब। दैट्स अ गुड। तो हमेशा वो ऐसे, मतलब आई हैव बीन, मतलब ओल्ड, ये मेरी वाइफ के पहचान का है, तो हाँ अच्छा हाँ हाँ डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। आप भी कभी आओ पुणे, एंड इफ यू वांट टू बाय हाँ सर, आई इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन राइट। डेफिनेटली इफ यू गेटिंग फॉर दैट प्राइस आई लव। मैंने बैंगलोर, मेरे जो दूसरे फैकल्टीज है ना, उनको अभी हाँ मेरा हाँ चल रहा है अगले 2 months में, उनको बैंगलोर में एक एक लैपटॉप भेजने का, अगर ये रेट पे है तो, ऐसे। हाँ यार। आई एम इवन थिंकिंग ऑफ पी लेवल बैचेस नेक्स्ट क्वार्टर, पूरा फॉर पी ऑल द लेवल का। सब्जेक्ट्स सर। यस, पहला एएफएम से आई विल स्टार्ट, करेक्ट। हाँ। एएफएम एंड एसबीआर, 2 सब्जेक्ट्स। उसके बाद स्लोली स्लोली गो इनटू अदर सब्जेक्ट्स, ऐसे। सो एसबीआर भी आप भी लेंगे? नहीं नहीं, डिफरेंट। एसबीआर नॉट माय कप ऑफ टी। आई हैव अ फैकल्टी जो वर्ल्ड बैंक में काम करती थी पहले, हाँ हाँ हाँ। एंड वाज इन दुबई फॉर आई थिंक अ गुड अमाउंट ऑफ 12 years, ठीक है। शी वाज वर्किंग विथ वर्ल्ड बैंक, फिर उसका आई थिंक शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, एंड एसीसीए नहीं है मेरे हिसाब से, बट शी इज टीचिंग एसीसीए इन बैंगलोर सिंस अभी 4-5 साल। आई मीन टॉक्स विथ हर, अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ है। हाँ अगर तो हो कम गया नेक्स्ट तो क्वार्टर। शील भी, हाँ, एसबीआर ट्रिपल ए, बट क्या मालूम इफ शी अग्रीज, पहले तो वो है, राइट। अगर वो अग्री करेगी तो बढ़िया, नहीं तो एसबीआर के लिए एक्चुअली थोड़ा सा ना फील्ड ओपन है। एसबीआर इज अ सब्जेक्ट वेयर अ लॉट ऑफ फैकल्टीज डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग, गुड बिजनेस है, राइट। ऐसा है, देखते हैं, चलो आ जाओ। yesterday we stopped where, guilds, right, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। corporate bonds और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, राइट। उसी को यस। गिल्ड्स बोलते, गिल्ड्स, जनरली गिल्ड्स, ये वर्ड अगर यूज हुआ और उस पर का इंटरेस्ट टैक्सेबल is to be taken, then something that we do, right. So aa jao. Now what happens here is, before this we understood what, tell me, savings income or dividend income, whatever it is, okay, will be taxed on what basis, tell me, receipt basis, विजिट पेजेस में। बराबर है। But when there is a sale between two interest payment dates, देखो how things work, आराम से, normally
right? If I give you a question, right, that I have a gilts or government securities, okay, so let's say Mr. A purchased a government bond for 15,000 on 1/10/2022. Nominal value is 12,000 irrespective, correct? But interest will be calculated on nominal value or on the purchase price. Tell me. Interest, Nominal value. Nominal value. correct? So interest is payable every 6 months on 31st December and 30th June every year. Mr. A sells the government bond on 31/3/2025. Kabhi? 31/3/2025 25. for 18,000. Calculate interest taxable every year for tax year 22-23, 23-24 and 24-25. This is what the question says, right? But इसको थोड़ा और simplify करता हूँ, correct? Let's say you buy 15,000 pounds में purchase price, right? You buy certain gilts, government securities, right, or corporate bonds, $12,000 nominal value, correct? And let's say 6% per annum is the rate, and date of purchase is, let's say, 1st of January 23, correct? Right? Then, yeah, better. हाँ चलो 1st of January चलेगा, correct? Then there is no sale, right? And they are asking you for tax year 23-24, correct? How much is the interest that will be taxable, right? And interest payable, right? Interest paid on 30th June and 31st December, correct? 30th June and 31st December. ठीक है क्या? देखो जरा, मेक सेंस? टेल मी. अगर इंटरेस्ट ऐसे पेबल है और कोई सेल नहीं है कुछ, नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू चेक, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इंटरेस्ट टैक्सेबल, राइट, इन टैक्स ईयर 23-24. so first thing what you have to do, you have to make a timeline, okay? 23-24 में this is what 6/04/23, correct, and 5/04/24. सबसे first thing that you check is whether there is a purchase or sale of gilts within this tax year. Yes or no? Tell me. है क्या कोई purchase या sale within this No. year? No. Right? So without asking any questions to yourself, correct? First mark when are the two interest paid. एक तो 30th June यहाँ पे, June. correct? And 30th या 31st December. December. And what will be the interest that will be paid here? Have a look. Interest will be what? Tell me. You will pay kitna re baba? 12,000 7. into 6%. 720. Into 6 720. by 12. Kitna re? 720 Oh, pounds. so, Correct? नहीं सर, And अब here 6 by also 12 नहीं. 720 pounds. बराबर है ना? I think 360 होगा सर. 360. Okay. So हाँ, 360, 6 by 360. 12 नहीं. हाँ, तो 360 and 360. बराबर है क्या? Total 720, but will be paid as what? 360. Without asking a lot of questions, full 360, 360. So your interest taxable in tax year 23-24 will be how much? Tell me. 720. It will be 720 total, 720. right? Receipt basis पे क्या होगा? Taxable. Any doubt here? Tell me. No. इसमें कोई टेंशन आपको होना भी नहीं चाहिए. अगर now let's go a step ahead, correct? एक थोड़ा सा let's go step ahead कि instead of this, right, let's say the same details, correct? ये क्या हो गया? Right? Then I tell you that you sold the gilts for $18,000. Okay. Gilts, full gilts having what? Nominal value of $12,000. Correct. At, let's say वो 6% per annum, वही ऊपर वाले gilts, right? You sell it on 1st of January 24. Correct. When do you sell it? Tell me. 1st of January 2024. अभी आराम से. Don't rush. Again, make what? A timeline for a tax year, and they are asking you taxable interest. Yeah, interest taxable, right? In tax year
23 24, आराम से जाओ, गड़बड़ में 604 23 504 24. ओके क्या? टेल मी व्हेन इज द फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट? टेल मी 30th. 30/06/23. बराबर है. On this date, how much will be the interest that you will receive? Interest received, tell me. 360. 12,000 into 6% into 6/12. How much is that? 360. 360. बराबर है. अब 31st दिसंबर एक दिखा, सॉरी, एक मिनट. If I give you 1/11/23, right? You sold on what date? 1/11 से अच्छा एंड का डेट दे देता हूँ. वेट, I give you for So 30th 1st December November 23. हाँ Okay. हाँ. अब नेक्स्ट डेट कब है आपका? 31/12/23. बट डू यू हैव द गिल्ट्स विथ यू और आर द गिल्ट्स सोल्ड बिफोर दिस डेट? टेल मी. Sold before. सोल्ड बिफोर, तो यहीं पे कहीं पे सेल हो गया 1 year बिफोर, 1 month Yes. बिफोर, करेक्ट. सो लॉजिकली विल यू रिसीव इंटरेस्ट हियर? टेल मी. No. No. नो. बट Accrued basis. बट right, between two interest payment dates, is there a purchase or sale that has occurred? Tell me yes or Yeah. no. Yes. Yes. Transaction is occurred. So from the last interest date up to the sale or up to the purchase date, barabar, up to the sale date, that means you are eligible for interest of how much? Tell me. Logically you held it for 5 months, correct? How many months did you held it for? 5 months. Yeah. So 5 you months. should get an accrued interest of how much? 300. 12,000 into 6% into 5/12. 5 How by much is 12. that? Tell me. 300. 300 pounds. So if I ask you in tax year 23/24, correct? How much is the interest that you should tax? 360 that you received, that is on receipt basis, plus Receipt basis. 300 on what? Accrual basis. So Accrual again, basis. coming back to the what? ये देखो, if there is no sale or purchase of bonds between two interest payment dates, ठीक है, then the interest will be taxed on receipt basis. Receipt basis. देखो यहाँ पे कैसा था? बिटवीन टू इंटरेस्ट डेट कोई परचेस सेल था क्या? टेल मी. 30/06 और 31/12, नो, राइट. बट इफ देर इज अ परचेस और सेल बिटवीन द बॉन्ड्स बिटवीन टू इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, अभी इस केस में, अपने केस में सेल था, करेक्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट विल बी टैक्स फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टू डेट ऑफ सेल. और अगर परचेस होता, अब देखो परचेस का ऑप्शन देता हूँ, करेक्ट. अब देखो, लेट्स से सेम डिटेल, थोड़ा सा चेंज. You bought the on 1/10/23, you bought what? Your क्या है? Tell me. Gilts. तो अभी वापस Gilts टैक्स ईयर purchase. 23/24 में आता हूँ. 6/04/23 to 5/04/24, बराबर है क्या? Tell me. देखो, so 30th June will be your date. इस डेट पे तुम्हारे पास क्या गिल्ट्स थे या नहीं थे? Tell me. Did you purchase the gilts by this date? Tell me. Yes. No. किए परचेस? कभी परचेस किए? देखो, No. 10th October. 1/10/23, Yeah. करेक्ट. तो 31st December 23 को क्या हुआ? अब देखो, लॉजिकली आपने परचेस किया कभी? 1/10/23 को, बराबर है, डेट ऑफ परचेस. अब वापस मैं पूछता हूँ, बिटवीन टू इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स डिड यू परचेस और सेल द गिल्ट्स? यस, आपने परचेस किया. Yes. तो डेट ऑफ परचेस से लेके आपको इधर रिसीव कितना होगा? पूरा 6 months का रिसीव 2 कितना months. होगा? 12,000 into 6% into 6/12. बट लॉजिकली ओनली अक्रूड, आपने पूरे 6 महीने होल्ड किया क्या? नहीं. इंटू 6% इंटू 3/12 यू हैव हेल्ड इट. सो ओनली 180 pounds विल बी टैक्सेबल. बराबर है क्या? देख लो, you will receive 12,000 into 6% into 6/12, but how much will be taxable? Did you hold for full 6 months to get the interest for all 6 months? No, you held it for only 3 months. So देखो, second part of the table, if there is a sale or purchase of bonds between two interest payment date, then accrued interest will be taxed from date of purchase to next interest payment date. बराबर है क्या?
चलिए have a look. यही किया क्या मैंने, फ्रॉम डेट ऑफ परचेस ये 3 महीना विल बी टैक्स्ड, नॉट फुल 6 मंथ्स। रिसीव होगा, देखो रिसीट कैसे होती है, ऑन द डे ऑफ द रिसीट और इंटरेस्ट पेमेंट हुएवर इज द ओनर विल गेट फुल 6 मंथ का इंटरेस्ट, बट डिड यू होल्ड इट फॉर 6 months? No, you held it for only 3 months. So interest 3 that will be months. taxable in your hands will be only for 3 months. Correct. So this question, can you try, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते क्या, आ जाओ। इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे व्हाट, टाइमलाइन, राइट। लेट्स ड्रॉ द टाइमलाइन, लॉन्ग टाइमलाइन। एक मिनट, सर क्वेश्चन को थोड़ा एनलार्ज करो ना। रुको ना, मैं अलग ही ये कर रहा हूँ, रुको, ये क्वेश्चन इधर ही रहने दो, क्वेश्चन आई विल टेक ऑन द लास्ट पेज। आ जाओ, टाइमलाइन नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आ जाओ। सो पहले या तो 3 टाइमलाइन ड्रॉ करते, चलो टैक्स ईयर 22-23, ठीक है, फिर टैक्स ईयर 23-24 और टैक्स ईयर 24-25, 3 ही है ना ये टैक्स ईयर, देख लो जरा इधर, ठीक है ना। चलो आ जाओ। मिस्टर ए परचेस अ गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर 15,000 ऑन व्हाट डेट, टेल मी। 110 व्हाट, टेल मी। 2022। 110-2022, तो 22-23 में आ जाओ, करीबन यहाँ पे समवेयर ईयर मिडल, 110-22 में बाय गिल्ड्स, करेक्ट, By ठीक है, ओके है। देन बोलो 7% पर एनम, 12,000 का नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 6 months ऑन 31st December एंड 30th June। अब इसके बाद वाले या इधर 2 डेट कौन से थे, एक 30th June, बट ऑन दिस डेट डिड यू होल्ड द गिल्ड्स, टेल मी। no. No, so no interest receivable here, but on 31st December We 23 had did you receive interest? Yes, but tell me, will you yes. receive, see, even if you receive whatever amount of interest you receive, irrespective, correct, tell me how much interest will be taxed. Will it be taxed on receipt basis or will it be taxed on what basis, tell me? रिसीट receipt बेस basis होगा Yes. या accrued basis होगा, tell me? By रिसीट बेसिस होगा सर। receipt basis होगा। between two date of purchase. between two interest payments is there a purchase or sale, tell me? या हाँ, तो Yes. क्या होगा, टेल मी। 3 months का 3 months from year to year, correct. So how much will be taxed here, 12,000 nominal value into 7% into 3 3 by by 12, 12. कितना होगा बेटा, टेल मी। 210. 2 210 210. 210। 210 pounds अभी 23-24, अभी फ्रॉम देयर यू आर होल्डिंग 31/12 के बाद नेक्स्ट पेमेंट डेट इज 30/06/23, June. देन 31st December 23। अब देखो, रीडिंग द क्वेश्चन हेड, ओके। मिस्टर ए सेल्स द गवर्नमेंट ऑन 31/03/25, यानी आ जाओ जरा, मिस्टर ए सेल्स ऑन व्हाट, 31/03/25, यानी टैक्स ईयर 24-25 में ही सेलिंग, कभी और वो भी, टेल मी। 31/03/25 ये लास्ट डेट पे इधर, करेक्ट, यहाँ पे 30/06/23 और इधर 31/12/24 होगा और यहाँ पे 24, बराबर है क्या। अब देखो यहाँ पे कोई सेल परचेस है फ्रॉम ईयर, नाउ सी, फ्रॉम 31st December 23 अप टू 30/06/23, टेल मी, कोई परचेस या सेल है, टेल मी। नो, No. तो रिसीट बेसिस या अक्रूड बेसिस, टेल मी। Receipt. रिसीट बेसिस, यू विल रिसीव हाउ मच, 12,000 into 7% into 6/12, how much is 6 that, by 12. tell me। कितना आएगा रे, 420, 420. यहाँ पे भी 420, देर इज नो परचेस और सेल बिटवीन दीज टू पेमेंट Correct. डेट्स, करेक्ट। फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा, टेल मी। 4. 420, ये 30/06 को, करेक्ट, यहाँ पे भी 420 आएगा, बराबर है, ओके है क्या। यस। बट गो अहेड,
एक मिनट, 3103.25 को बेचा। अगर मैं बोलूँ एक और स्टेप थोड़ा आगे जाता हूँ, 3006.25, विल यू रिसीव इंटरेस्ट? इधर सेल हो गया, तो विल यू रिसीव इंटरेस्ट ऑन दिस डेट? टेल मी। No. 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 But as you are holding for 3 months, between two interest payment dates, is there a purchase or sale? Tell me. Yes. Yes. So from date of what? Last interest payment to date of sale, these 3 months. So your 12,000 into 7% into 6 by 12 will be taxed in which year? Tell me. ये वाले साल में कितना आएगा? 20. 210. So first Sir, year it will be 3 200. by 12 ना, क्या? 12,000 into 7% हाँ, Three तो into by 6 नहीं, 3/12 बराबर। 3/12, 420. 3/12, तो 210 आएगा ना वापस। yes. तो देखो अभी कैसे टैक्स होगा यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे 210 विल बी टैक्स्ड, करेक्ट। यहाँ पे 420 प्लस 420, 840 विल बी टैक्स। टैक्स ईयर, 840. दिस इज टैक्स ईयर 22-23, दिस इज टैक्स ईयर 23-24, 324. and this is 24-25, because you sold within 24-25, करेक्ट है क्या? देखो, दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, राइट। ओके है, देखो। Yes, sir. चलो देन, Yes. लेट्स मूव वन मोर स्टेप अहेड। एक मिनट। सो एनी प्रॉब्लम यार? टेल मी। एक आधा No. क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, रुको, आई विल गिव यू होमवर्क विच यू कैन ट्राई। एक क्वेश्चन होगा मेरे पास होमवर्क का, पॉसिबली। ये क्या ओपन हो गया? एफएम ओपन हो गया। यूके टैक्स है ना आपका? एक क्वेश्चन है क्या रे होमवर्क का? नहीं, मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया क्या? हाँ, एक ही क्वेश्चन करवाया था। बट क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ? टेल मी, कैन आई गिव यू वन क्वेश्चन? टेल मी, लिखो। मिस्टर ए परचेस्ड अ गिल्ट for 17,000 pounds, having nominal value of 10,000 pounds at 6.5% per annum. 6.5% per annum interest payable on 30th April, एंड है, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, एंड 30th October. Sir, purchase date is not given. Mr. A purchased the goods on 31st May 2022 and sold on 31st March 2024. Calculate interest taxable for tax year 22-23 and tax year 23-24. ठीक है क्या? Will you be able to handle? आज पहले सिटीजनशिप, टैक्स स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कर ले। टेल मी। सर वो तो लास्ट में करवा, सबसे बोरिंग टॉपिक वो है।
ठीक है, आप बोलेंगे वैसा। चलो आ जाओ फिर। खाली देन कम टेबल टू से दिखने वाला है वो चीज। क्या क्या क्या। वो खाली सर टेबल का ज्यादा यूज है उसमें, और थोड़े पॉइंट्स यानी नॉट इतना। वेरी टफ हाँ, टू से, बट ठीक है। रिगोरस आ टॉपिक जाओ। नहीं है वो कोई ऐसा। प्रॉपर्टी इनकम में यू हैव व्हाट, 1 2 3 4। बेसिक प्रॉपर्टी इनकम, शॉर्ट लिस्ट टैक्सेशन, रेंटर होम रिलीफ एक पार्ट है, और लास्ट फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन। फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन तो ओनली यू हैव व्हाट, डेफिनेशन ऑफ एफएचए, राइट। फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन में क्या है, ओनली डेफिनेशन, राइट। डेफिनेटली। बेसिक प्रॉपर्टी इनकम में देयर इज अ फॉर्मेट दैट यू फॉलो। वो फॉर्मेट अगर आपने फॉलो किया तो मोस्ट ऑफ योर थिंग्स आर डन, करेक्ट। शॉर्ट लीज ड्यूरेशन में और शॉर्ट लीज टैक्सेशन में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, लीज प्रीमियम रिसीव्ड माइनस वो क्या है, याद है आपको, व्हाट वाज दैट, टेल मी। लीज प्रीमियम रिसीव्ड माइनस क्या करते थे आप, टेल मी। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ लीज। शॉर्ट लीज में दो रेवेन्यू, कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल कंपोनेंट विल कैपिटल डिडक्ट। कंपोनेंट एंड रेवेन्यू कंपोनेंट। रेवेन्यू कंपोनेंट इज टैक्सेबल, करेक्ट। तो आप शॉर्ट लीज प्रीमियम में से कैपिटल कंपोनेंट माइनस करते, द फॉर्मूला इज गिवन बाय होम, एसीसीए देमसेल्फ, करेक्ट, या यूके टैक्स देमसेल्फ, राइट। फिर रेंटर रूम रिलीफ में अप टू 7,500 वी हैड व्हाट, टेल मी, थिंग्स दैट आर टू बी डन, राइट। ओके, so let's go one more step ahead. So there is a format, very basic format. Here are format. आ जाओ जरा, क्या है फॉर्मेट, प्रॉपर्टी इनकम, राइट। फॉर टैक्स ईयर 23 रिसीव्ड बेसिस और कैश बेसिस। रेंट रिसीव्ड बिटवीन द पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखना। बिटवीन 6/4/23, राइट। जनरली अब जो कैश बेसिस और रिसीव्ड बेसिस का फॉर्मेट है ना, जनरली इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, द बेसिक assumption इज फॉलो कैश फॉर्मेट या कैश सिस्टम। दैट मीन्स ऑन डिफर्ड। रिसीव्ड बेसिस, राइट। दैट मीन्स अगर इफ यू रिसीव द रेंट देन ओनली टैक्स इट, इफ यू डोंट रिसीव द रेंट देन डोंट टैक्स इट, राइट। अक्रूवल पे टैक्सेशन नहीं होगा, करेक्ट। टैक्सेशन कैन नॉट बी ऑन अक्रूवल। यस, टेल मी एनी प्रॉब्लम। नो सर। तो एक मिनट, हाँ। ये कैसा अच्छा दिखता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, सर सुपर इन्फिनिटी वाला। ये पहले वाला, वाला है। यही अच्छा है ना। चल चल, तो मैं क्या बोल रहा था कि देन रेंट रिसीव्ड बिटवीन द पीरियड 6/4/23 फॉर यू टैक्स ईयर 23-24, सो 6/4/2023 to 5/4/2024, correct. Then allowable expense paid between the period 6/4/23 to 5/4/24, वो भी expense भी have to be paid, not payable वाले नहीं चलेंगे, accrual नहीं चलेंगे। Major expenses are what, insurance, agent fees, redecoration and painting, gardener's fees and replacement domestic item relief, RDIR, right. अभी इंश्योरेंस में देर विल बी सर्टन थिंग्स दैट विल बी टैक्सेबल, राइट। तो एक क्वेश्चन है, आई डोंट नीड टू सॉल्व द फुल क्वेश्चन बट वी कैन डिस्कस इट, ठीक है। आ जाओ। मिस्टर ए इज अ प्रॉपर्टी दैट ही हैज रेंटेड आउट, बराबर है, टू अ tenant for 4,500 pounds from 1st September 2023. The rent is received monthly at the start of the month. Mr. A paid following expenses. अभी आराम से, how much will be taxed in the year 23-24? एक मिनट, he pays what, 109/2023, right, is when he took the, so पहले तो ये निकालो आराम से, 4,500 पर एनम है, तो पर मंथ रेंट कितना है, टेल मी, हाउ मच द पर मंथ रेंट, 375। 375। अभी एक यस। मिनट, सितंबर का मैंने कब पे किया, 1 सितंबर, करेक्ट। यस। अक्टूबर का मैंने कब पे किया, 1 अक्टूबर, करेक्ट। यस। फर्स्ट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अब आराम से कितने महीने हो गए, टेल मी, 7 मंथ्स, करेक्ट। 7. Yes. और अप्रैल का, क्या मैंने अप्रैल में पे किया, या एक मिनट वापस, सितंबर स्टार्ट, Hmm. अक्टूबर स्टार्ट, October. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए। एक Yes. मार्च को पे होगा, एक अप्रैल को पे होगा, अप्रैल का, टेल मी। Yes. 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 So will 1st April 2024 be covered in 23-24 or not covered in 23-24? Yes, it will be covered. क्या बोलते हैं Covered. निशान, covered because up Covered to it. 5/4/24. So how many payments? 8 450, payments. 375 into how many months? 8 months. 8 months. So can I say that if I want to write the answer, so rent 8. received will be what? Tell me. 3,000. 8. 3,000. 375 into 8 ना रे, कितना होगा, 3000। 3,000, sir. ठीक है, how 3000, are you okay? Tell me. Yes. Then redecoration done in August 2023 for 250 pounds, paid in September 2023. Tell me, are you going to look at when the thing happened, or are you going to look at, tell me, when it is paid? Tell me. Paid. When it is Paid paid. September 2023, so 250 pound माइनस हो जाएगा। Sir, but either ways, both the dates are falling in the tax year, na? कोई बात नहीं, बट मैं इस पे फोकस करूंगा या इस पे फोकस करूंगा। Paid. Paid. गार्डनिंग एक्सपेंसेस 150 डन इन मार्च 2024, पेड इन जून 2024। What should I focus on? March 2024 or June June 2024? 2024, not June relevant. 24. Not on March 2024. तो इधर आएगा या नहीं आएगा in Not 23-24? relevant. No. Not possible, ठीक है। उसके बाद एजेंट फीस 200 पेड ऑन 1st March 2024, अलाउड और नॉट Yes. अलाउड, टेल मी। Yes. अलाउड, Allowed. 200 पाउंड। अभी इंश्योरेंस देखो, फॉर द पीरियड 1/1/24 to 31/12/24 पेड ऑन 1/1/24, only Allowed. 3 months should I take or full 300 should I take? Full. Full 300. 300 irrespective of what period you have paid, right? तो 3000 में से ये तीन चीजें डिडक्ट होगी, this will be your what, tell me? 2250. That will be your taxable rental income or property income, correct? Income. Make sense? Tell me. Yes. Yes. Then देखो, इस पे मैंने 2 नोट लिखी है। Any expense incurred before the property is what, tell me? Rented out where property was vacant will be allowable expenses। मतलब क्या, देखो any expense incurred before the property is rented out, मतलब देखो, someone said that sir I will take the property only if you do certain painting। अब जनरली क्या करते हैं, if you want to rent out the property, what you would do, tell me? You would paint the property and then rent it out। Rent So it out. any expense, right, that you incur before the property or vacant property before letting it out will be an allowable expense। But if you are self occupying the property and you incur any expenses in that period, will that be allowed as an expense or is that a private use expense? Tell me। वो Private private use. expense है दोस्त, बराबर है क्या? Tell me। That is private use expense, correct? Tell me yes or no। अभी property income में have a look, if nothing is mentioned, follow what, cash basis। if Cash basis. अब वहां क्या दिया हुआ है, if rent receipt is greater than 150,000 pounds, then if specifically mentioned in question that follow accrual, then only follow accrual बाबा, नहीं तो what you do, not Cash specifically basis. mentioned in question, follow cash basis, correct? Cash. देख लो, okay है क्या, tell me, Yes, sir. right? Then have a look, ये वाला question, correct? The same question that we had have done right now। एक मिनट के लिए आ जाओ, ये क्वेश्चन, if I had to do on accrual basis, ये हो गया कैश बेसिस, करेक्ट, दिस इज कैश बेसिस। if I had to do on accrual basis, please help me, on accrual basis how will I do? आराम से करो। now see, you took the property at start of September, right? accrual में सोचो जरा, what will you do in accrual? September, October, November, December, January, February, March, how many months of rent will you accrue? रिसीव तो 8 महीने का हुआ है, लेकिन अक्रूवल कितने हुआ, अक्रूवल इज द नंबर ऑफ मंथ्स द प्रॉपर्टी इज रेंटेड आउट। तो कितने मंथ्स प्रॉपर्टी इज रेंटेड आउट इन टैक्स ईयर 23-24, टेल मी। 7 और 8 मंथ्स, टेल मी। देखो,
from 1st September. So September, October, November, December, January, February, March. April, is it within tax year 23-24 या वो 24-25 का पार्ट है? Tell me. अप्रैल मंथ कहाँ 24, कंसिडर करोगे? Tell me. 24-25. तो कितने महीने का रेंट लूँ यहाँ पे? 8 months और 7 months? Tell me. 7. What is the Nishan? 7, sir. 7. So how much is that, Baba? 2625. Correct? No? 225. Then tell me, 1 August, redecorating done in August, paid in September. As per accrual, when will the bill be booked? August में या September में? Tell me. बिल कभी बुक होगा? अगस्त और सितंबर अक्रूवल में? क्या बोलते हैं निशान? Tell me. August में. अगस्त में. So is August. it within tax year 23-24? Yes. Yes. So 250 negative. क्या रहता है? क्या कर रहा है? नहीं सर, यही नोट्स का ही लिख रहा हूँ। हाँ. उसके बाद आपका have a look. Gardening expenses 150 pound done in March 2024, paid in June 2024. अब मार्च 24 में किया तो बिल कब आएगा? टेल मी. अक्रूवल कब होगा? मार्च 24 और जून 24. टेल मी. अक्रूवल March व्हेन विल में. इट हैपन? मार्च. तो शुड आई टेक इट इन टैक्स ईयर 23-24 और नॉट टेक इन टैक्स ईयर 23-24? I should take in March. टेक इट. 150 पाउंड नेगेटिव. उसके बाद लास्ट वाला, टेल मी. एजेंट फीस 200 पाउंड पेड ऑन 1/3/24. उसी दिन इनवॉइस आया, कुछ बाकी डिटेल नहीं, तो वो कंसिडर कर ही लो. 200 पाउंड. करेक्ट. एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट इज इट? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड 1/1/24 to 31/12. अभी हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 23-24 आर कवर्ड? इंश्योरेंस अक्रूवल बेसिस पे अगर करना है एंड इट इज अ 12 month 3 insurance, months. what you will do? 3 3 months in months. what? 23-24. 9 months in what? 24-25. 3 24-25. month का ही आएगा. 300 into 3/12. How much is that? 12. सर, इसके पहले आपने वो क्या पॉइंट बताया था? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड 75. प्रॉपर्टी तो फिर उसके लिए एक्सपेंस बताता हूँ. पहले नहीं है ये ना? बताओ कितना है? 300 into 3/12. 75. 75, sir. 75 pounds. So how much is taxable? Tell me. Accrual में 6, 7, 1950. 1950. Correct. Yeah. आया समझ में? Tell me. हाँ. If now have a look. I'll tell you. देखो, मेरी प्रॉपर्टी है, right? I bought a new property. It is vacant, right? Yeah. I did all painting shunting to give it on rent. Will that painting shunting be a allowable expense? Tell me. Yes. But एक मिनट. Simple, right? If एक मिनट सुन लो. I am staying in the property. I do all painting venting, and in next 6 months I leave the property and rent it out. Painting shunting while I was in the property, allowable expense or not allowable expense? Not allowable So because read it is self occupied. That's why, na? देखो, same thing लिखा है. Yes. Correct. Yes. Then property income, are you okay? If nothing mentioned, follow cash basis. If what? Rent receipt greater than 150,000, right? If not specifically mentioned in question, cash receipts or cash basis. Correct. Or else if specifically mentioned in question, तो accrual पे जाना भाई. नहीं तो accrual पे you don't need to go to accrual. Okay. Tell me. Now come to the last part. We've discussed all the expenses, income. अब आएगा replacement of domestic item relief. Replacement of domestic item relief. आ जाओ. So now have a look. आराम से. What is the scenario? I'll make you understand. Okay. The scenario is something like this. Hear me out. एक second, ना. Scenario is something like this. Now let's say I have a property. I have given it on rent. So before giving it on rent, right? Now see, I don't know whether you know it or not, but whenever you are renting out a property, you will need what? You will have to buy certain furniture. Like I'll tell you, I used to stay in Mumbai, correct? So in my flat, I already had a bed, correct? Already had a sofa, फिर already had even your gas connection, correct? Even my owner had left a fridge and a washing machine, correct? All these domestic items that are needed to stay in a residential property were present at the premises. Okay है क्या? Tell me. Now let's understand from my owner's point of view, what will be allowed as a deduction, what will not be allowed as a deduction. Simple. I'll tell you.
Now, whenever I initially buy the sofa, bed, your क्या रहता है तुम्हारा curtains, cushion, वो जो भी तुमको बोलना है, all that is covered in the replacement of domestic item or domestic items that are there, right? Fridge, washing machine, dishwasher. Maybe in India dishwasher is not that famous, but out of India dishwasher is very famous. क्या बोलते हैं निशान? Do you do the हाँ dishes or is it नहीं इधर नहीं है dishwasher? सर। इधर नहीं है ना? हाँ, आई थिंक नहीं यूएई में नहीं है, मोर ऑफ यूरोप नहीं, एंड आई थिंक हाँ उधर यूरोप एंड यूएस साइड पे डिश वॉशर इज वेरी फेमस, राइट? इंडियन पीपल हैव अ प्रॉब्लम, वी कांट यूज व्हाट, टेल मी, ग्लास कटलेरी, है ना? देर इज अ एविडेंट फियर, इंडिया यानी एशियन कंट्रीज में एविडेंट फियर है कि बच्चे तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, है कि नहीं? होता है ना? यस, सो दैट, Sir, so over there, things like dishwasher are a necessity over there. यस, डिश वॉशर, फिर तुम्हारा क्या है, टेल मी, Heater. हीटिंग, हीटर हो गया, राइट? हीटर तो आई थिंक दुबई में भी नहीं, दुबई में नहीं लगता होगा ना, यूएई नहीं में इधर हीटर का नहीं तो, नहीं, इधर बट खाली एसी का इधर एसी, एसी इज व्हाट मैंडेटरी, विदाउट एसी मैंडेटरी नोबडी है। वोंट लिव देयर, राइट? So that is one thing, हाँ, correct? So initial cost of whenever I buy all this before giving it on rent is not allowed as an expense. वॉशिंग मशीन सबसे फेमस आने वाला है ना, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, फ्रिज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसमें भी डिश वॉशर इज मोस्ट फेमस क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम. Initially, when I buy it, not an allowable expense. But now let's say what happened, I gave it to one tenant, right? 2-3 years happened, right? That fridge now is a fridge, meaning washing machine is now old, correct? So I have to replace the washing machine, okay? In that case, let's say I had a old washing machine. Now see, let me also explain you, washing machine में भी दो type रहते हैं, okay? First type is what? There is a fully automatic washing machine and there is a semi-automatic washing machine. I don't know whether you know the concept of semi-automatic washing machine. मालूम है what is Yes, yes, semi-automatic? sir. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ Correct. सर। So what is semi-automatic? There are two what tubs. Tubs. Correct. Yes. टू One टब्स है, tub does all the washing. Then with your One hand tub you have to pick does up spinning. and then put ड्राइंग it के in the लिए other भी। tub. Other tub dries the clothes. Right. Now you had this washing machine, right? After 2 years, you replaced it with that kind of washing machine only, correct? And you took what, semi-automatic only, no tension. Let's say old washing machine कितने में खरीदा था मालूम नहीं. New washing machine you bought for 500 pounds. That is a replacement वाला, correct? That is semi-automatic only. And you said, boss, देखो ये old washing machine is there, right? Can you give or can you reduce some amount? He said, sir, no problem, we'll give you 100 pounds scrap value. So 400 will be the RDIR that will be deducted, RDIR that will be deducted from your what, allowable expense, right? This is first scenario, okay? देखना, first scenario, right? Second scenario, right, is what? Sir, semi automatic nahi, there is one washing machine, you have one big tub, everything happens into that only, washing, drying, सब कुछ, spinning, winning, सब कुछ happens in that one tub only, right? In that case, right, you bought a new washing machine for 700 pounds. That was what, semi automatic, correct? But what does the law say? You will get not 700 pounds, but on the day you are buying the what, the better equipment, right, or the modern equivalent as they call it, right, you have to ask for the same type of domestic item. That is how my old one was what, semi automatic. Semi automatic अभी कितने में अवेलेबल है? तो you will not get 700, 500 में ही अवेलेबल है, and old can be sold at 100 pounds. So scrap value 100 pounds and 400 would be only taxable, correct? So in both the situation, whether I buy what, a semi automatic or what, fully automatic, what I will get, what, tell me, the RDIR for 500 minus the scrap value of the old. So you buy a modern equivalent, you will get RDIR at the cost of equivalent or same type of domestic item only. I'll give you one example. I have one example ready with me, big example, but उसमें से can we do very big example? I'll take it in parts. Wait.
आ जाओ जरा. This also I'll break it up in two parts. Wait. Wait. आ जाओ जरा. Let's read the first part. Okay. So Mr. A has letted out his property and has received rent from March 2023 up to Feb 2024 as 760 pounds per month in arrears. In arrears means what? At the start of the month or at the end of the month? Tell me. End of the month. End of the month. So March 23 का where have I received? Tell me. In एक मिनट, arrears on the 8th day of the next month. मतलब March 23 का have I received in March or 8th April? Tell me. 8 April. April. 8th April, correct. So 8th April, would it be in 23-24? 8th April 23. Would it be in 23-24 or 24-25? 24, 25. 24, 25. 23-24. March 23. March 23 का when will you receive? Okay. हाँ. Feb 24 का when will you receive? Tell me. March 24. March. March 24, 8th March 24 बराबर है. Yes. तो ऑल यानी क्या क्या डेट्स आएंगे? टेल मी द डेट्स क्विकली. 8th April 23. फिर क्या होगा? 8th May 23. फिर 8th June 23. 8th July 23. August, करेक्ट. September, October, November, December, Jan एंड Feb. कितने महीने हो गए रे? देखो जरा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 months. So 760 per month into how many months? 11 months. That is how much? Tell me. 860. 8360. Correct. Then gardener expenses 125 for the month of Jan 2023. Paid in which month? April 23 at end. मतलब 23-24 में आएगा या 24-25 में? Tell me. 24, 25. 24-25 पढ़ता है कि नहीं डेट? 23, 24. 23-24. April 23 means when? Tell me. We are doing for which year? We want rent to income for tax year 23-24. Correct. तो 22-23 में होगा या 23-24 में होगा? Tell me. 23, 24. Then insurance paid for the period 1/1/23 to 31st December and paid on 1/6/23. तो कौन से मंथ में? Tell me. और कौन से ईयर में? 22-23 और 23-24? Tell me. 23, 24. 24. राइट. अभी इंटरेस्ट ऑन लोन इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू. ठीक है. नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. रिपेयरिंग ऑन रिनोवेशन. ठीक है. हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है. Mr. A has replaced a semi-automatic washing machine with an automatic washing machine for 250 pounds and sold the whole machine for 75 pounds. Market value of similar semi-automatic machine as on date of replacement during tax year 23-24 is 175 pounds. बराबर है. यानी मेरे को 175 minus 75 मिलेगा या 250 minus 75 will be my RDIR. Tell me. Read it. New fully automatic is for 250. 175 minus 75. So 175 minus 75 बराबर है क्या? देख लो एक बार. What do you say, निशान? Make sense or does not make sense? Tell me.
बोलो बोलो। विल यू गेट द न्यू मॉडर्न इक्विवेलेंट का कॉस्ट और विल यू गेट द ओल्ड इक्विवेलेंट का कॉस्ट? न्यू वन, न्यू वन। देखो जरा इसे, ओल्ड एंड एक मिनट एक वन मिनट। विच इज बाइंग। ये देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट और सेम टाइप ऑफ डोमेस्टिक आइटम, यानी ओल्ड वाला पार्ट, करेक्ट, बराबर है। हाँ, मतलब क्या है, अगेन एक्सप्लेन। सेमी ऑटोमेटिक था, सेल करके फुल्ली ऑटोमेटिक लिया, करेक्ट। तो जिस दिन आप सेल करने गए, द डे यू वेंट टू सेल द वॉशिंग मशीन, उस दिन मॉडर्न को छोड़ देने का, जो ओल्ड हाँ है ओल्ड, उसका उसका रेट जो पड़ मार्केट रहा है। वैल्यू आज अगर वो खरीदा तो 500 पाउंड में पड़ेगा, उतना ही ले लेने का, करेक्ट। दैट इज हाँ हाउ इट तो सर, दिस, राइट। तो 175 माइनस 100 इट विल बी देयर। यस तायर, टेल मी। सर, कैन यू गो टू दैट प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन? हम्म, ये हाँ, तो सर अगर इसमें इफ यू हैव ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी फ्रॉम मार्च 23 टू फेब हम्म, 2024, तो सर फिर 12 मंथ्स होने चाहिए ना इसके अंदर? कौन से, कहाँ से ऑक्यूपाइड बोल रहा हो, कौन सा? If she have received rent for March 2023 to Feb 2024, तो हाँ, सर 12 मंथ्स होने चाहिए ना फिर आप कैसे हम लोग 12 ने। मंथ्स होंगे? मार्च का पैसा कब मिला, टेल मी। अप्रैल बराबर। अप्रैल 2023। अप्रैल 2023, बराबर। हाँ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अरे हाँ, फेब्रुवरी का एक मार्च में भी मिला, बराबर 12 मंथ्स होना चाहिए। तो 12 मंथ्स, करेक्ट। ओके, क्या देख लो। सर, हाँ वही मैं कब से सोचा 9120 होगा सर उसका टोटल। 9120, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आर यू ओके विद इट? हैव अ लुक, यस। राइट। ये हो गया। सो यू, whenever you go to replace the domestic item and you are buying a modern equivalent, modern equivalent छोड़ दो, ask him, ये पुराना वाला है ना सेमी ऑटोमेटिक, वो अगर न्यू खरीदते तो कितने का, दैट माइनस द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड विल बी योर RDIR, करेक्ट। देन हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा ना अभी खाली। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेसिंग और अक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी, whenever there is an interest on loan for purchase. Now, generally it happens that you buy a property, correct? It is taken on loan, right? And then you rent it out. होता है. Most of the cases it will happen that way only. If loan is for residential property, right? Not an allowable expense for property income, but allowable as tax allowance at 20% of interest on loan. अब देखो, इफ लोन इज फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अपने लिए तो सारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, करेक्ट। So loan on residential property will not be an allowable expense, correct? But it will be what? A tax allowance at 20% of interest on loan. यानी एक मिनट, अब can you see this interest on loan for acquiring property 750? Will it be an allowable deduction from your property income? Tell me. नो। No. नो सर। But it will be what? A tax allowance from what? चला Tax calculation. बराबर है क्या? क्या? Right? So how it will be if I complete this question? Okay. एक मिनट, ये ई पॉइंट हो गया ना, इसके बाद द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। तो पूरा क्वेश्चन आ जा आप। ये रहा ई पार्ट और ये रहा रिक्वायर्ड पार्ट। मिस्टर ए के दूसरे डिटेल्स दिए हुए हैं, राइट। सो इट्स अ होल क्वेश्चन इन 2 पेज। पहला ABCD, करेक्ट, देन ई, एंड देन दिस पार्ट। सो इन दिस केस SI and DI is given. Have a look. Employment income, SI and DI. With that, can you calculate total income? With that, SI DI वगैरह, फिर टैक्स कैलकुलेशन में टेल मी, विल देयर बी अ टैक्स अलाउंस ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, टेल मी। यस, लेट मी शो द आंसर टू यू। हाँ, बट इफ इट इज अ नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट, और अ प्रॉपर्टी और एन FHA, अलाउड। then it will be an allowable deduction from what? The income that is there, right? So क्वेश्चन का आंसर है क्या अपने पास? हाँ, कैश बेसिस आंसर इज योर, so you can check today. Okay,
This is the cash basis answer. Have a look. 12 months, correct? देखो जरा 9120. Then 125 gardener's expense, insurance 175. Interest on loan will be a tax allowance. Repairs and renovation not allowable because it is not paid within 23-24, and RDIR 175 minus 75. Correct? Accrual basis I think I must have given for homework. Cash basis पे ये रहा calculation of taxation and everything. You can check. मुझे नहीं लगता कि ये computation of income I should solve. Now you are what? Smart enough to do this. कर पाओगे क्या? Tell me. You can have a Yes, look, sir. right? Property income में ये question solve करने में कोई logic नहीं है, right? You can do your what own practice. तो प्रॉपर्टी इनकम लेके आओगे. ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट इनकम इज गिवन, सेविंग्स इनकम, डिविडेंड इनकम इज गिवन. फाइंड द टोटल इनकम, करेक्ट, एंड देन नेट इनकम, करेक्ट. देख लो माइनस पी वगैरह करके. दिस इज द कैलकुलेशन. अक्रूवल वाला पार्ट होमवर्क. यू कैन ट्राई अक्रूवल होमवर्क. ठीक है, ओके है. याद रखना बट इंटरेस्ट ऑन ओनली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, विल बी व्हाट अ टैक्स अलाउंस. नॉन रेसिडेंशियल होगा तो क्या? टेल मी. शॉप वगैरह समथिंग रेंटेड आउट, will it be a tax allowance or will it be what? Tell me. Allowable deduction, tell me. Shop not residential property, what will happen? Allowable deduction या क्या? Tell me. allowable. Allowable deduction, correct. So देखो, if you are okay, then we did something called as short lease premium. एक मिनट before going ahead, okay, if there are more than one properties, correct, what will you do? पहले वो बात कर लेते हैं, correct. एक मिनट. Losses can be settled off against each other. ठीक है. हम्म, बट सर एफएचए का नहीं होता ना, एफएचए का सेपरेटली ट्रीट होता है. एफएचए का सेपरेटली ट्रीट होगा, हाँ, करेक्ट. बराबर. एक मिनट, आई विल हैव दैट. नहीं तो उसके नोट में लिखा के दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Have a look at this question. If Mr. A has two properties, right? One is having profits, one is having loss. Then property income. This is what after all income minus allowances. अगर आप देखो 15,000 का 23-24 में 15,000 का प्रॉफिट, 7,000 का लॉस. प्रॉपर्टी है 15,000 प्रॉफिट, 7,000 लॉस. So what will happen in 23-24? 15,000 profit minus 7,000 loss, 8,000. What will happen? Profit will go to the computation. अभी computation में याद करो, computation में in NSI property income will go, correct? Then in 24-25 you have 18,000 losses of property and 10,000 profits of property B. So net you have what? Loss. This loss will be carried forward, correct, and can be used against future profits. In future 25-26, do you have 5,000 and 7,000 as your income? Yes. So against that 5,000 and 7,000, 12,000, the old loss of 8,000 can be used, correct, and your 4,000 will be taxable, correct. This is how things will happen, right? So if you want, I can write a short note on this, correct, that if a person has two properties, net profit या loss will be taken to, will be considered, right? If there is a profit, right, then to be added in will be added as income in computation. But if there are losses, if there is a net loss, correct, it will be basically booked. It will be booked as income in computation. But if there is a profit, right, then to be added in will be added as income in computation. But if there are losses, if there is a net loss, correct, it will be basically booked. It will be basically booked
in loss memorandum, correct, and carried forward and used against future property profits, future property business profits, ठीक है. Example is there above, refer example above, ठीक है. ओके, देख लो, मेक सेंस, टेल मी. Then let's go ahead. Now let's go into what? Tell me. Your lease का taxation. Tell me. Short lease premium. In short lease premium, generally I take taxation of both. See, right now in property, you are going to do taxation of what? Only the owner. Now see what happens. Mr. A, correct, has leased out his property. Example. Correct. For let's say 15 years. Okay. For 70,000 pounds. And his tenant is Mr. B. Correct. This is how the lease premium is given to you. Tenant is Mr. B. And let's say lease starts on 1/10/2023. Correct. For Mr. A. So Mr. A is who in this case? Tell me. Owner or tenant of property? Tell me. Owner. 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 Mr. A is owner. Correct. And what about Mr. B? Tell me. Tenant. Tenant. Is a tenant. So for owner, what does the law say? Owner के लिए तो very bad. So tell me, for the owner, lease premium received is how much? Tell me. 70,000 pounds. Correct. Out of this, there will be some revenue component and some what? Capital component. How to calculate that capital component? Now, why I'm saying some capital component and some revenue component? क्या लगता है? Why is the case that there is some revenue, there is some capital component? ऐसा क्यों होता होगा? Tell me. Why do you pay lease premium to someone? ये सोचो. Q. Now see, I'll tell you simple. In India, you must have seen that you have what? Whenever you buy a property, whenever you rent a property, correct? तो property में क्या होगा? Tell me. It will be given to you for generally 11 months या 24 months या 22 months का contract you do, right? 11 or 22 months का rent contract you do. And what does the owner say? Right, after 11 months, we'll renew the contract, correct? Now see, consider a shop where you are doing business. 11 months, first 11 months you set up your business and the business starts working. So you renew it for more 11 months, right? So kitna ho gaya? 22 months. That means 2 years you are into the property. Now your business is set up, right? Now what will the owner do? He sees your business is set up and you are earning a lot of money against that. What he will do? Tell me. He will increase the rent in third year. Why? Because he knows now you are earning good money. So you can ask for more rent, because now can you leave the shop and go in third year when your business is set up? Tell me. No. So he will play a ploy on you. What? In third year if you want to continue, so मेरे को double rent दो. He will ask for double rent. Is it legally correct? Tell me. Not really correct. So what does so once 1 or 2 year happens, or let's say at the start also, you are very confident. Let's say a company like McDonald's 100% knows that this is a good what? Tell me. Market and a good spot, right? I am taking the land on lease for 10 years and I'm going to pay a lump sum amount to you for locking in the property for 15 years, 20 years, or whatever, 10 years, correct? So whenever less than 50 years, right, you lease out a property, generally you pay certain deposit so that that person holds the property for 11 months. And because of you paying one big amount, will your every year or every month rent
be comparatively lower? Tell me. Yes. So two components, a revenue component, which is what reduction of rent has happened, right? Monthly rent is reduced because you gave a very big lease premium at the start, right? And there is some part of deposit. So what happens? This 70,000 Mr. A gives, and Mr. A says, or Mr. B gives to Mr. A, and Mr. A says, at the end I'll give you back deposit ka 30,000. So logically, how much is the capital part? Deposit ka part is what? Capital part. But it is not so easily distinguishable. So UK tax has given a formula. LP received, that is lease premium received, is 70,000 minus LP received, that is 70,000, Into correct, 2% into n minus into 2% for every year, right, into 1. n minus 1. N is nothing but 15 years kal is 15 minus 1. So how much is this? Tell me. 70,000 into 2% into 14, that is 28% of 70,000. 19600. 19,600 minus. So how much is the revenue component? This is the capital component. How much is the revenue 5400. component? 50,400. 400. This will be taxable fully in the hands of Mr. A, right? Oh Taxable no. fully in hands of Mr. A on 1st of 1/10/23. बराबर है क्या? अभी logically, if this is taxable and revenue component, that is rent paid by Mr. B to Mr. A, then Mr. B should get full expense in his hand as allowable deduction, full 50,400. But law does not give him 50,400 fully. It says 50,400 is for how many years? Tell me. 15 years. 15 years. So divide this by 15. And in 23-24, how many months was the transaction for? Tell me. 6 months. 6 months. So 6 by 12 will be your allowable deduction for Mr. B, that is tenant. How much is this? Tell me. Ishan, समझा क्या? Tell me. 6 months each. This 50,400 should have been Uh, allowed as an expense to Mr. B, correct? But what is the problem? Tell me. He is not given full 50,400 as full deduction 50,000. in his P&L. He is saying that, Array, this 50,400 paid for how many years? 15 years. So divide by 15. And in this year, right? So divide by 15 is yearly. So how much is yearly? Tell me. 50,400 by 15. Tell me how much is yearly deduction? Tell me. 3360. Yes. So 3360. 3360, no? Huh. So Yes. 3360 is yearly. But did you use the lease for the full year? Tell me. No. No. You entered the lease on 110. So this will be only for 6 months. So कितना होगा? 1680. 1680 pounds. So have a look. देखो. Owner taxation. Lease premium received minus capital component. Taxable fully as property income in hands of the owner. Correct. But this revenue component not allowable as fully deduction in the hand of tenant. Revenue period by lease premium or lease period into what? Tell me. Number of months lease operated in tax year divided by 12. 12. Allowed as what? Expense from profit of tenant. TAT. 10. This will again come in self-employment. I will repeat it right now. See, long story short, owner taxation में lease premium received minus lease premium into 2% into n by 1 capital My. component will be deducted and fully taxable property income in the hands of the owner. Oh no. Tenant का taxation is what? The revenue component by lease period, correct, into number of months in tax year lease operated by 12, correct. Have a look. Okay, this is one question. I have one more question on this. This you can have a look. One more question. Homework. ठीक है. This question you can have a look today. This is homework.
चलो, take a 5-7 minutes breather, then we'll continue. ठीक है, come back by 11:08. Okay.
चलो ठीक है, चलते क्या? टेल मी. Right, then lease is what, this is what lease is all about. But this is what, there are two types of lease, short lease and long lease. ये है short lease premium that is there. If there is a long lease that is more than 50 years, right, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? टेल मी. लॉन्ग लीज विल बी व्हाट? देखो मेरे को लॉन्ग लीज इज नथिंग बट अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? सो इट विल बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट विल बी what, a chargeable gain will arise, right, when you sell a leasehold or a long lease property. So short lease premium has some capital and revenue component. Long lease premium, अगर कोई long lease ले रहा है, so that is purchase of property, correct, and is full capital in nature, so now will not be taxable at all, right? Then going ahead, then you have something called a rent a room relief, right? What is rent a room relief? First understand the logic of rent a room relief. Very simple part of what? Now see, you have a property, okay, and you have given the property, or out of the full property you have given only one room as rented to a individual, correct? Generally होता है paying guest. Tell me, do you know something called as paying guest? The same concept. But at times what people started doing is paying guest की जगह पे they used to keep one relative into that room who had access to all आपका. So from that room he can even access your kitchen, he can access your living room वगैरह, ऐसा सब कुछ अगर होगा तो rent a room, that is not a concept of rent a room. Rent a room will only apply when that person has a different room in the house, right, and he does not have access to all other rooms into the house, right? So rent a room concept will only apply, right, when, so let's say you put a paying guest in your house who is occupying one room, correct? So what happens generally here is, so let's say you receive some rent from him, correct? Up to 7,500 of rent that you receive from a rent a room person or a rent a room business or rent a room activity will be exempt. That means you don't need to pay tax on it, correct? But if it is more than 7,500, up to 7,500 deducted, or let's say something of this sort happens. Have a look. Two situations I'm giving you. There was a rent a room relief guy, or you had rented a room to someone and he paid 6,500 pounds to you, right? Up to 7,500, no, 6,500 will be a relief that will be given to you and zero taxability will arise. But now someone is paying you 8,500, right? You have not done any expenses on the room, right? So 7,500 will be allowed as a rent a room relief, correct? 7,500 deducted, 1,000 will be taxable as a rent a room receipts that you get. But now see, your room is very hi-fi room. 15,000 pounds is your what? Rent a room receipt, correct? And now you did expense of 10,000 on this for the year. Now see, you have an option of taking 7,500 ka relief that is given by law. But if your relief amount is lesser than the expenses that you have done during the year, then these expenses will be deducted and 5,000 will be taxed. So in a nutshell, if you look at this chart, have a look at this chart. What you have to calculate? If rent a room receipt or rent a room relief income is less than 7,500, fully exempt. देखो जरा, what do you say? If rent a room relief income is more than 7,500, then rent a room receipt minus RAR relief 7,500 whatever is taxable, or RAR receipts minus actual expense, whichever is lower, you will tax as property income. Have a look. Getting it? Tell me. क्या बोलता है निशान? Make sense? So here, tell me where you earn 15,000.
Okay. Oh, sir. Here you could take 7,500, but the expenses were only how much? 10,000. So what you'll do, sir? 15,000 minus 7,500, right? That will give you taxable 7,500. But sir, 15,000 में से ना sir, actual expenses are 10,000, correct? So taxable is 5,000. So what would you as a what assessee want? 7,500 taxable or 5,000? Tell me. 5,000. 5,000. So lower is taxable in rent a room relief, correct? Now what started happening? Okay, अभी ये 15,000 वाला person no got greedy कि यार sir वैसा 15,000 इधर 15,000 fully on my name. So what he did, he said to the renter or the paying guest, do one thing, 7,500 pay to me, 7,500 pay to my wife. Perfect tax planning. Perfect tax planning does not appear. ऐसा उसने perfect tax planning किया. So what happens? Renter room relief in both the husband wife hand, correct, and zero taxable. यहाँ पे तो 5,000 taxable हो रहा था, correct, but यहाँ पे तो zero taxable हो रहा है. Great. What? Tell me. Tax planning. But the government came with a tax planning that rent a room receipt for a single room paid to two spouses. देखो जरा, read this note. Rent a room receipt for a single room paid to two spouses, right, owning the house will be considered as a single payment. Yani 7,500, 7,500, two different payments should be considered or only one payment should be considered? Tell me. Only one. Only one. Only and only one payment should be considered. लफड़ा मांगता ही नहीं है, टेंशन मांगता ही नहीं है, करेक्ट? मेक सेंस? हैव अ लुक. चलो, टेल मी. यस, टेल मी तायर. So I have this one question here. According to the UK tax system, if logically we see to this condition, so wherever there are incomes, so the thing is generally we take higher of both if the conditions arise, and wherever there are benefits or allowances given to an individual, लोअर. we say यस, that logically the system is designed in such a way that lower of the two will be given. So sir, why for this renter room relief they are giving lower of the two? बिकॉज देखो ना, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी लो होगी, वहां पे वही आप टैक्स करोगे. सी, यू यर हैव टू थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असेसी, what is more beneficial for him, correct? Most of the cases where UK tax comes up, correct, UK tax will think of himself, right? Yeah. खुद का सोचेंगे every time, right? But there are rare cases where you think from the assessor's point of view, correct, or the taxpayer's point of view, right? Have a So for look. this situation, they have given a leverage. Okay, they will think Yes, from the point of view of assessee. yes, Okay. right. Then last, I have a question for this. You can have a look at this question. Good question. Once you can have a look. देखो, इतना कुछ difficult question है नहीं तो I would have taken it in class. Okay. You can just have a look at it once. You will be done. Okay. Same thing that I have told you, right? कर लोगे? Tell me. Okay. चलो. Then you have furnished holiday accommodation. What is furnished holiday accommodation? Have you heard about furnished holiday? First, let's discuss the concept of furnished holiday accommodation. Now, I don't know whether you know it. Now, let's say from Pune and Mumbai, right? You have something called as a hill station between Pune and Mumbai called as Lonavala, right? Wherever you have a hill station which is what? Tell me. Closer to your city. Generally, what people of the metro city do, right? They try to buy property in the what? Tell me. Nearby hill station. And then what they do? They go there for 10-15 days in a year. Maybe weekend pay they go there, right? Come back, right? And do their work, right? Now, other than that 10-15 days or 10-15 weekends that they are there, maximum 20-25 days that they are there, remaining 340 days the property remains vacant, correct? So what they do, they start a business on the side that when they are not there the property should be given on rent, correct? This is a perfect candidate
for a furnished holiday accommodation. Now, how they give it on rent? Simply, right? Generally, they give it on rent for ऐसा like we give houses in city, or they give for 3-4 days, 5 days, 10 days? Tell me. ऐसा tell me, how do they give? अभी आप देखो, आपका कोई सेकेंड हाउस है in some what? Tell me. Hill station. Will you give it on rent to someone for 2 months, 3 months, 1 year ऐसा? Or will you Yes, give sir. it For on per short night period, basis? 1 day, 2 day, day 1 day, 2 10 days. base day. day by Airbnb types, correct? 1 or 2 nights, Yes. 3 nights, 4 nights, right? Same thing is with the FHA, correct? Now tell me, when you give it on, say 1 night, 2 night, or maybe 4-5 nights, right? Will it be a fully unfurnished property, or should it be a furnished property so that anyone who comes can stay there and comfortably do, or comfortably whatever enjoyment or party they've come for, right? They can do, or can sleep and do everything there, right? So will it be a unfurnished property, or will it be a fully furnished property? Tell me. Generally, All the facilities will be available to them. correct, full furnished, right? So the first, so FHA ka only definition is covered. The property is furnished for letting out, correct? Has to be fully furnished, because furnished holiday accommodation का first word ही है furnished, right? First condition has to be fulfilled. Second condition, right? Letting out of property should be on commercial basis with the intention to earn profits. ऐसा नहीं कि you do it for what 10,000 का वर्थ है, you give it for only 100 pounds. ऐसा नहीं, जो उसका वर्थ है, do it for what profit purposes. Then it is available to let out to the public for more than 210 days, right? It should be available for minimum 210 days. That means you can go and stay, but 210 days it should be clearly available for the public to come and occupy, right? Out of that, it should actually be occupied by the, or let out to the public for minimum 105 days, right? And it cannot include 105 days. अगर आपने किसी को बोला 3 महीने के लिए रेंट पे दो, 3 months you want to give it on rent, not allowed. The span you give for what actual let out should be less than 31 days. If you give to let out for 31 days, it becomes renting, no? Right? So that will be there, correct? Have a look. So even if you have let it out should be less than 155 days. Abhi I'll tell you one thing. Even if you learn this much, correct? Abhi tak, up to now, if you check all the questions that have been asked, never ever has a question on FHA been asked for verifying all this number of days. बराबर है. I take 1 or 2 questions in class which calculates the number of days, but honest to God opinion, ठीक है, I don't think these questions can ever come in the exam. मेरा ऐसा what, tell me, that is there, it will not generally come in exam, ऐसा मेरा बोलना है, ठीक है. So there is one question, I'll just put it out, we can discuss it, but not that important, ठीक है. So, sir, we should not emphasize on remembering these dates. डेट्स नहीं, नंबर ऑफ डेज हो सकता है. Yeah, yeah. Sorry, number of days. Yes, but I don't think this question that I have taken, I have developed this question on my own. कोई बुक में ये क्वेश्चन नहीं है. सेम थिंग वो QIP याद है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स. Not a lot of questions, or never a question has been asked on it. But I don't know, I want to be what super secure, so I do a question on this. अभी देखो, Mr. A owns a holiday accommodation which is fully furnished and commercially let out. He stayed in the property for 85 days, and remaining time property was available. So out of the 365, he stayed 85 days. So how many days is the property available for let out to public? Tell me. 280 days. 280 days, correct. Then he had rented out the property to Mr. B. अबे आराम से 280 days were available to public for what? Tell me. So tell me. सबसे पहला तो it was a furnished property. Commercial basis पे he is going to let out, furnished and commercially let out. Correct. First two. Then third, more than 210 days. It was 280 days. So more than 210 days, is it available to the public? Tell me. Yes. Then have a look. He had rented out the property to Mr. B. अब देखो यहाँ पे दो है. If actual let out has to be more than 105 days, and long term occupation, that means if you give it to someone for rent, should not be more than 155 days. Correct? So 4 things I have to remember. पहले तो furnished plus commercial, correct? Third thing is what? More than 210 days.
then should be available and should be occupied 105 days. And if you are giving it out on rent, the renting period should not be more than 155 days. अभी देखो, he had rented out the property to Mr. B from 1/1/24 to 31st March. यानी कितने दिन के लिए रेंट आउट किया था? Tell me. How many days? 1st April to 31st March 2024 for tax year 23-24. Tell me. How many days was it rented out? रेंट आउट किया था, लेट आउट नहीं. 1st Jan to 31st March. How many days was it rented out? Tell me. ऐसा कंटिन्यूस मोर देन 31 days था, तो हाउ मेनी डेज? टेल मी. 91 days होगा क्या? टेल मी. 91. 91, 90 या 91 days, वट एवर इट इज, करेक्ट. या बराबर है. फिर वो था, वो लेस देन 155 होना चाहिए. एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, अभी देखो 365 में से 85 गया, 91 गया, रिमेनिंग कितना? 189 डेज. उसका 80% इट शुड बी लेटेड आउट, और इट हैज बीन लेटेड आउट. सो 151 हैज बीन लेटेड आउट, so more than 105 days. ऐसा कैलकुलेशन है. नॉट एवर आस्क्ड इन एग्जाम अभी तक. जस्ट गो थ्रू इट वंस, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. ठीक है. सर 80% कहाँ से आया? क्या 80% कहाँ से आया? 80% मैंने बोला है. आउट ऑफ द रिमेनिंग डेज द प्रॉपर्टी वाज ऑक्यूपाइड फॉर व्हाट? 80% ऑफ टाइम्स. ओके. क्वेश्चन में दिया. यू कैन रीड दिस क्वेश्चन वंस, शांति से रीड करो. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड टुमारो यू कैन आस्क मी. ठीक है. I will explain once again. Then एक पार्ट था विच आई थिंक, हाँ, अगर आपको ना, सुनो, राइट, if use a car, correct. Now see what happens. Let's say you have a rented property or property that you have rented out, correct. You are in one city and the property is in another city. हो सकता है? Tell me yes or no. You have to travel from one city to another city to overlook. Let's say you have given it to a tenant and the tenant says, sir, there is a lot of problem, correct. You come here and have a look at the problems that are there, right. So you have to go there, right, cater to his problem, come back to your own city. So you will use a car to go and come. Tell me yes or no. Logically there is an expense of what? Fuel and all that stuff, right, on that car, correct or not. So how much should be, so that expense, should it be allowed as an allowable expense? Yes. But on what rates? Should you use some petrol receipts or something? No, right. There is something called as an AMAP. We are going to do tomorrow. Probably tomorrow AMAP will be there, right. So I will tell you what the AMAP rates are. So allowable expense may note, very important note, if you use a car for what? Renting purposes, right, then AMAP deduction will be available on the car used for business of property renting. ठीक है. वो कल AMAP क्या है? Tomorrow or day after maximum, right, AMAP will come up, so you don't need The to. same criteria of AMF will apply here. Yes, same. So let's say you are driving 15,000 miles, right. Yeah. So जैसे AMAP में first 10,000 at some rate and next 5,000 at some rate, 4.5 peso. वो same will apply here, correct. And that will be an allowable expense because you went to what? Visit the property. ठीक है. उसके बाद FHA देखा था अभी एक मिनट के लिए. FHA के what? Tell me. Different types of tax treatment of FHA. मुझे नहीं लगता this is ऐसे very धासु important, but still have a look. FHA, cash basis and accrual basis both allowed for what? But cash basis is default basis. Then any expenses whether revenue or capital will be allowed. अभी देखो वहां पे capital expenses. Now see, if I rent out a property, okay, सुनो, only revenue expenses are allowed. But सुनो, if let's say I rent out a flat, okay, then I increase one more room into that flat, so will the expense of increasing that one room be allowed as an expense from that flat का rental income? Tell me. सोचो. Will it be allowed? What do you say, निशान? क्या लगता है? हाँ 4 BHK फ्लैट था, राइट. यू गिव इट ऑन रेंट. फिर तुमने उसको वन मोर रूम ऐड किया, 5 BHK कर दिया, तो वो जो 5th रूम को कंस्ट्रक्ट करने का जो खर्चा है, विल इट बी अलाउड एज एन एक्सपेंस फ्रॉम योर रेंटल इनकम? टेल मी. सोचो. शुड इट बी अलाउड रादर? क्या लगता है निशान?
No, yes. Additional it is. Additional, is it a capital nature expense or is it a revenue nature expense? Tell me. Extra additional property added, is it capital or revenue nature? Tell me. देखो और एग्जांपल देता हूँ. इफ 4 BHK में रूफ थोड़ा खराब हो जाता है एंड यू रिपेयर द रूफ, revenue expense or capital expense? Is a new asset coming in picture? Tell me. No, it's a revenue. But from 4 BHK you move to 5 BHK, एक और बिल्डिंग या फ्लोर ऐड किया, करेक्ट, ओवर The कैपिटल और capital. कैपिटल. Capital. Will it be allowed as a expense from your revenue income of No. rent? But in FHA, any expense, what, revenue or capital will be allowed as deducted, correct? So revenue in nature है accrual basis पे, capital in nature accrual basis, right? Capitalize and claim what, capital allowance. Normal rental में no capital allowance, nothing, right? Interest on loan for purchase, right, will be allowed as a normal deduction, वो tax allowance नहीं, correct? देखो, right? फिर FHA losses can be carried forward indefinitely and used only against same FHA business, correct? So you have two FHAs, you cannot add and do net profit or net loss. एक का लॉस होगा तो वो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है. When you get profit from that FHA, against that only you can write off. This is all about your what, property income, right? With this property income is done, right? Sir, can you explain this line written after the third point? Yeah, any expense which is interest on loan, नहीं, any expenses which is capital in nature. कैपिटल एंड नेचर, अक्रूवल बेसिस पे बुक्स में कैपिटलाइज होगा और उसके ऊपर कैपिटल अलाउंस मिलेगा. विल एनी कैपिटल अलाउंस बी अलाउड इन नॉर्मल रेंटिंग बिजनेस? नो. नॉर्मल रेंटिंग बिजनेस में कैपिटल अलाउंस कुछ नहीं. एफएचए में कैपिटल अलाउंस बिकॉज इट इज नॉर्मल बिजनेस, बट नेवर एवर हैज दिस बीन आस्क्ड इन एग्जाम. ठीक है. ओके सर. हाँ, बट दिस इज रेडी, गेटिंग यू रेडी फॉर एटीएक्स. एटीएक्स में क्या ये क्वेश्चन है? हाँ. एफएचए का टैक्सेशन है, हाँ, पूरा का पूरा टैक्सेशन ऑफ एफएचए इज देयर, बट फ्रॉम एटीएक्स लेवल ऑल्सो इट इज नॉट वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है. ठीक है. तो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर. टुमारो वी डू इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. टुमारो थर्सडे फ्राइडे, तो 2 दिन में भी कंप्लीट इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी डन, राइट? एंड सैटरडे एंड संडे 2 days, right, we do questions on employment, right? Next week let's say we complete self employment in small chapters, right? तो next week के end पे मतलब 15-16 we do questions on self employment and small chapters. उसके next week I complete IST VAT, right? IST VAT, rather I should complete IST VAT chargeable gains, ठीक है, या corporation tax, उसके questions, right? And then at the end corporation tax जो थोड़ा बहुत बच जाएगा, we can do that, right? I hope the speed is not a problem. What do you say, Nishan? No, no, sir. No, Absolutely sir, fine. it's fine. Absolutely fine. You are solving questions, you are understanding what all important parts are. I am focusing on that part completely so that you Yeah. don't miss out on any detail, right? एकदम detail में जाके we are taking questions, right? Mm. So see, logically Sir, if you, I wanted to say that you can speed up a little bit. We are ठीक है ना, going. कोई प्रॉब्लम नहीं. कल इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है, राइट? आई विल स्पीड अप अ बिट, चलेगा? इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टुमारो एंड डे आफ्टर में विल ट्राई टू कंप्लीट, ओके, विथ एनआईसीस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट? क्योंकि सी आई अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन सैटरडे संडे, लेट्स से इवन इफ वी से 20-25 MCQs, ठीक है, एक दिन में वी कुड डू इन एन आवर और सो, एंड देन 2-3 आवर्स में वी कैन डू 3-4 आवर्स, 3 और 4 आवर्स, 3 आवर्स के आसपास वी कैन डू 5 to 6 सेक्शन सी क्वेश्चन. बहुत हो गया, मोर देन इनफ है. 5 क्वेश्चन भी बहुत हो गए, करेक्ट, ऑन एम्प्लॉयमेंट. 1 out of the 5 इज बाउंड टू कम इन एग्जाम, ठीक है, सेम टाइप, या उसमें से एक एक एडजस्टमेंट फ्रॉम एवरी क्वेश्चन इज बाउंड टू कम इन एग्जाम. ठीक है, चलेगा? Okay. Okay, then let's wrap it up for today. We'll meet tomorrow, right? Sir, I'll give you हाँ a reminder for that tomorrow. You can solve my issue for हाँ that. हाँ, कर दूंगा कल पक्का. सुबह 10 बजे मेरे को मैसेज कर दे, आई विल गेट इट Yeah, डन yeah. फ्रॉम. मेरे पास I'll टीम text है, तू you. टेंशन मत ले. सब I'll ये text सब you के and लिए. I'll give you a reminder. यस, सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, नाउ टेल मी, थोड़ा सा हेल्प मी आउट. व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि, एक मिनट, ओके, गुड नाइट देन गाइस, विल Good मीट night, sir. Thank you. tomorrow Thank you, sir. 9:45. Bye. Till then, bye bye, take care of your health, good Bye, night. sir. Bye. Good night. Thank you.